Now third question is, if x by 5 equals 0.6 bar plus 0.41 bar, then find the value of x. इस एक्सप्रेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इस रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए शॉर्टकट मेथड की हेल्प से पहले हम इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.6 बार, यहाँ पे कंप्लीट नंबर है 6, सो न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू डिपेंड करती है रिकरिंग डेसिमल पे। तो यहाँ पे सिंगल नंबर ही रिकरिंग हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में हम सिंगल टाइम्स 9 लिखेंगे, प्लस 0.41 बार, सो कंप्लीट नंबर है यहाँ पे 41 और 2 डिजिट से रिकरिंग है, सो डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 9 आ जाएगा। Now we will take LCM of 9 and 99, which is equals 99. So 99 divided by 9, which is equals 11. Then 6 into 11 plus 99 divided by 99, which is equals 1. So 41 into 1. X by 5 equals 11 into 6, which is equals 66 plus 41 divided by 99. X by 5 equals 66 plus 41, which is equals 107 divided by 99. To find the value of x, we will transpose this 5 on right hand side. So x equals 107 into 5 divided by 99. Then x equals 107 into 5, which is equals 535 divided by 99. So final value of x will be 535 divided by 99. इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।